Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SBI Securities. I hope I am audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, so that I know you all are with me live in the session. We just wait for a couple of minutes and then we should be good to go. Sanjeev ji, good afternoon. Sunesh ji, good afternoon. So for the ones who are attending this mid-market for the first time or have started attending recently, so this is how usually the mid-market session flows. Kasturi ma'am, good afternoon. Shubham ji, good afternoon. Sachin ji, Parmeshwaran ji. So we start off with global markets update. फिर देन हम मैक्रो इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. Then we look at the FI positioning. Then we look at Nifty, Bank Nifty, Sensex key levels, trend for the three indices. Then we look at RRG, which are the sectors that are strong, sectors that are weak. Then we look at stocks, which are the stocks that are strong, which are the stocks that are weak. And then we have one concept topic. If you remember, we've been doing fundamental concept topics now. Yesterday we discussed the P ratio and I gave you a small homework as well. I hope you all have got one stock. Even I have got a stock here, though it's not a recommendation, but even I've been doing homework for you. So again, we'll have one concept discussion today. So today we'll be learning about price to book value ratio. And then we will end up with a question and answer session. So that's how the session will take place for the next 45 minutes or so. Your brief on fundamentals, great Sachinji. I hope the examples are kind of clear, and I hope you all have got one stock. If you remember, sales growth, profit growth, cash flows, operating cash flows, ROE, ROC, net profit margin, EBITDA margin, debt revenue comparison, then along with low P as well. So I hope you all have one stock, and we'll discuss one more concept, and probably you can incorporate that also in your stock picking. Okay, so let us start off first with an update on the global markets. So अगर हम US markets की बात करें, so Dow Jones closed 0.13% lower. S&P 500 gave a flat close, almost 0.01% lower, while Nasdaq closed 0.16% lower. So there is some profit booking that we are seeing in the US markets, especially IT sector में भी काफी एक negative sentiment छाया है. बीच में Anthropic ने एक नया AI company, they are trying to automate a lot of processes. Even Altruist, I mean there's a new IT company that has kind of automated your legal processes. So IT sector is under a pump currently with the new AI related announcements that are coming in. I think that is going to shape the future for IT companies. Filal, I think one honest advice right now would be not to do any bottom fishing in IT, because wait for some signs of stabilization, thoda sa reversal aane ke baad, then maybe we can relook at IT again. But for now, I think IT as a sector is going through some changes here. So it's better to avoid IT sector for now. But also keep a track on the developments that are happening on the AI side, because I think that is going to be very important as we move ahead. I think there is one AI conclave also that is happening, I think February 16 to 20, if I'm not wrong. So a lot of top IT brains are going to come to India, and probably they are going to discuss AI and how AI is going to shape future going forward. So do watch out on that conclave. Probably we'll get some good emerging ideas going forward. If you look at Dow futures is flat. It's 0.21%. Yeah, it's happening in Delhi. If I look at the European, index, Germany closed 0.53% lower. London was up 1.14%. And France was down 0.81%. So barring London, which was up 1.14%, all the other European markets, closed in red. Eurostox index again had a flat close, 0.18% higher.
If you look at the Asian markets, Hang Seng was down 0.9%. Nikkei was, I think, flat close again. China also gave a flat close. Kospi, I think, continues to go up almost 3% higher. So Kospi तो एक अलग ही दुनिया में चल रहा है अब. Last year also Kospi was very great. This year also Kospi has started off on a positive note. It's up around 20%, probably the best performing global market index. So I guess South Korea is doing. South Korea has been in a focus for quite some time now. I think Kospi belongs to South Korea, so South Korea is doing well in that regards. Nikkei is up around 7%, but if you look at Nifty, Nifty is up 1% in the last 1 month or so. So Nifty again post the union budget, थोड़ा सा narrow range में हम चले गए, but overall थोड़ा सा बुलिश बायस बढ़ते हुए नजर आ रहा है, बट अभी तो वो प्राइस एक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. वी आर स्टिल अप अराउंड 1% हियर. If you look at Sensex and Nifty, again we are flat. Another day of narrow range. Sensex is down 0.52%, Nifty is down 0.44%. If you look at the macro indicators, dollar index की अगर हम बात करें, सो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 20-day EMA से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, भले ही थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन फेस में चला गया डॉलर इंडेक्स, बट आई थिंक जब तक 98 के नीचे रहेगा डॉलर इंडेक्स, तब तक ओवरऑल ट्रेंड बेरिश ही रहेगा डॉलर इंडेक्स का. दूसरी तरफ अगर हम यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10-year यील्ड्स की हम बात करें, सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स यील्ड्स में थोड़ा सा गिरावट नजर आई है. यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, चाहे वो जापानीज 10-year यील्ड्स हो, वो भी ऑलमोस्ट 2.3% का हाई से हम 2.22% पर आ गए. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की हम बात करें तो बीच में ऑलमोस्ट एक हाई लेवल पर आ गया था. यहाँ पे अगर आप देखोगे 6.77% तक हम चले गए थे, बट वहां से थोड़ा सा यील्ड कूल ऑफ हुआ है. सो आई गेस देयर इज सम बॉन्ड बाइंग इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ विच the yields has kind of come down. So nothing to worry as far as the yields are concerned, whether it's US, China or India. डॉलर बाय रूपी देखे, सो ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में चला गया. अब डॉलर 90.55 पर है. So $1 is almost 90.55 rupees. It's still consolidating. I feel अगर ये 90 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो it can move towards 89-88 levels. While on the upside, I think फिर से अगर 90.8, 91 की तरफ जाता है तो again, dollar can strengthen against the rupee. If you look at crude oil में कल एक रेंज ब्रेकआउट आया था, बट टुवर्ड्स द एंड सेलिंग प्रेशर आया था टुवर्ड्स $70.6 अ बैरल, और थोड़ा सा हम नीचे क्लोज हुए. But I feel the key level to track in crude oil now would be this level of $71 a barrel. अगर हम $71 a barrel के ऊपर जाते हैं, then I feel even crude oil prices will start going up. Breakout के बाद एक consolidation phase में आ गया है, but I think any move above $71, that is likely to push the crude oil prices even higher. इंडिया विक्स की अगर हम बात करें, यूनियन बजट से ऑलमोस्ट नीचे आ गया है यहाँ पे. The volatility has kind of cooled off. Nifty has been moving in a narrow band. So today evening we are doing a webinar from 4 to 5. And that webinar is going to happen on Batman option strategy. Usually हम एक range bound markets में करते हैं. So it is going to be a very important option strategy. I'm pretty sure काफी लोग तो Batman strategy, Batman हमने देखा है, Batman Superman, but Batman का एक option strategy भी होता है जो हम आज डिस्कस करेंगे 4 से 5 बजे. वो टिपिकली ऐसे मार्केट्स के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे वॉलिटिलिटी कम हो या वॉलिटिलिटी आपका कूल ऑफ हो और मार्केट एकदम से एक रेंज बाउंड फेस में है. सो विक्स इज आल्सो ऑलमोस्ट डाउन. इट्स अराउंड 10.06 से थोड़ा सा एक पुल बैक आया 11.62 तक, बट आई थिंक पोस्ट बजट द वॉलिटिलिटी हैज completely dried down. If you look at silver, Seema ji, I'll answer your queries towards the end when I look at the Q&A. Don't worry on that part. So if I look at silver, so silver again has been consolidating in the last 4-5 sessions. I feel for silver to go up, it needs to cross $90 an ounce. I think once it crosses $90 an ounce, chances are that silver can move up. On the other side, if you look at gold also has been consolidating since last 4 sessions now. Gold overall trend is still intact. I feel as long as gold trades above $5,000 an ounce, the overall trend is likely to be positive for gold. So
Between gold and silver, so silver was outperforming gold at one point, but I feel now gold is stronger than silver. Silver has seen some profit booking, even gold has seen some profit booking. But I think between gold and silver, gold is the one that is outperforming silver currently. If you look at the FI positioning, some very good promising signs as far as the FI sentiment is concerned. So FIs again bought yesterday. They bought around 944 crores in the cash market, and they have been net buyers in last 6 out of the 7 sessions, where they have bought roughly around 8,334 crores. So धीरे धीरे करके FIIs buying interest दिखा रहे इंडियन मार्केट्स में. But I feel ये डॉलर अगर और गिरेगा 90 के नीचे, maybe if it goes to 88, 87, I think this flows will only increase going forward. That is that only trigger. I think once dollar starts to weaken against the rupee, I feel FIIs will flock back to our markets, and that could also lead to more short covering in index futures. So index futures भी अगर हम देखेंगे तो बजट के बाद 1 Feb को हुआ था 12% से हम 22% पर आ गए लॉन्ग शॉर्ट रेशो में. सो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स पर भी. हालांकि अभी भी 80%, रफली अराउंड 78% शॉर्ट पोजीशंस है FIIs के पास. बट स्टिल बजट के बाद जो हमने ट्रेंड्स देखे हैं, सो प्रॉमिसिंग ट्रेंड्स है 12% से 22%. मतलब भले ही हम एक नैरो रेंज में धीरे धीरे शॉर्ट्स कवर हो रहा है, बट जिस दिन ये 22 से मान लो 25, 30, 35 हो जाएगा, तब आप देखोगे कि एक ब्रेकआउट आएगा एंड यू विल सी निफ्टी स्टार्टिंग टू मूव अप हायर अगेन. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ की ट्रिगर टू वॉच. That is your long short ratio here. Now talking about Nifty की अगर हम बात करें, so Nifty we opened, अगर कल के सेशन में अगर हम देखेंगे, so clearly 25,900, अगर आपको याद है 25,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था निफ्टी के लिए, और हमने 25,900 26,000 ये एक जोन हमने मार्क किया था. और आज हम 25,900 के नीचे आ गए. फिर हमने देखा था कि ये 25,800 तक आ सकता है अगर ये रेंज अगर ब्रेक किया तो. तो ऑलमोस्ट अगर आप आज का लो देखोगे 25,805 का है. क्लियरली चॉपी है आज का मूवमेंट. पहले नीचे था, फिर थोड़ा गेन किया, फिर डे हाई क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं से हम फिर से नीचे आ गए. डे लो के आसपास से फिर एक बाइंग इंटरेस्ट आया, हम फिर से ऊपर चले गए. सो अगर मैं की लेवल्स की बात करूं, आई फील आज के लिए आई थिंक शायद यही लेवल हम देख सकते हैं 25,800 का. वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है. बट आई फील ऑन दी अपसाइड 26,000 को जो रेजिस्टेंस था उसको हम और थोड़ा नीचे कर सकते हैं एंड 25,900 पे लेके आ सकते हैं. बिकॉज ये जो पहले एक सपोर्ट की तरफ काम कर रहा था, अब ये एक रेजिस्टेंस की तरफ हो सकता है. 2 बार अगर देखो, आई थिंक निफ्टी ने 25,900 तोड़ने की कोशिश की थी, बट नाकामयाब रहा यहाँ पे. So I feel till the time Nifty is below 25,900, the overall sentiment is likely to be bearish. And अगर 25,800 अगर टूटता है निफ्टी, then I feel इसका एक immediate support होगा 25,780. अगर हम वो भी ब्रेक कर देते हैं तो हो सकता है गैप फिल हो और निफ्टी शायद 25,700 तक हमें जाते हुए नजर आए. सो आई थिंक ये गैप जो बना था वो शायद फिल हो सकता है अगर हम 25,780 के नीचे जाते हैं निफ्टी में. बट अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली में भले ही एक कल के लो के हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल, ये बिकॉज ये ब्रेकडाउन हुआ था 25,900 का. एकदम छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं. मतलब अगर आप देखोगे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है निफ्टी में. यहाँ पे 3 कैंडल, ऑलमोस्ट एक साइडवेज कैंडल था, यहाँ पे ऑलमोस्ट डोजी कैंडल्स बना था. आज का भी आप बॉडी देखोगे तो एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडी है. सो देयर इज नथिंग हैपनिंग इन द फ्रंटलाइन इंडेक्स, दैट इज निफ्टी हियर. स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है. There are some mid-cap names, small-cap names that are doing well. Broader markets, in fact, are doing well, mid-cap and small-cap as compared to Nifty currently. But I think in this market, it's not a index-driven market. It's majorly or stock-specific action का ही market है यहाँ पे. So that is the level for Nifty. And if you look at Sensex, so Sensex भी ऐसा ही था. अगर हम Sensex देखें, I think I feel Sensex का जो immediate resistance होगा, that will be around 84,000, 84,100. Sensex ने भी यहाँ पे आज एक ब्रेकडाउन दिया एंड आई फील सपोर्ट विल बी समवेयर अराउंड 83,700. अगर हम 83,700 के नीचे जाते हैं, आई थिंक सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप फिल हो चुका है. बट अगर हम 83,700 के नीचे जाए तो हो सकता है शायद सेंसेक्स से पूरा गैप फिल कर दे. अभी पूरा गैप फिल हुआ नहीं है. पूरा गैप आई थिंक तब फिल होगा जब हम समवेयर अराउंड 83,600 के आसपास है.
So if Sensex goes below 83,700, then I think Sensex can move towards 83,600. And on the upside, the resistance has kind of shifted lower now towards 84,000, 84,100. So till the time we are below 84,100, the overall again trend is likely to remain sideways to bearish in Sensex here. अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो वही है, डेली चार्ट पर भी एकदम छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं. देखो ये साइडवेज एक जोन में था, फिर 2 दिन एक जोन में गया, अब फिर से कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है. सो एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडी कैंडल्स with minor wicks on either sides. I think that is reflecting indecision in the market. If you look at Bank Nifty on an other hand थोड़ा सा better perform कर रहा है, हम बोल सकते हैं compared to Nifty and Sensex. बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, भले ही निफ्टी एंड सेंसेक्स कल के जो लो था उसके नीचे ट्रेड किया, बट इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने लो को तोड़ा नहीं. भले ही बैंक निफ्टी एक रेंज में ही है, यहाँ पे एक इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 6780 का. भले ही सुबह हम एक हाई पे गए थे, बट 6870 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया बैंक निफ्टी के लिए. और बैंक निफ्टी हाल ही में आई थिंक साइडवेज ही है, कुछ मूवमेंट नहीं है, बट आई थिंक मे बी आप थोड़ा सा सपोर्ट इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, मे बी टुवर्ड्स अराउंड 6670 6680 के आसपास. दैट कैन बी द न्यू सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी. आई थिंक जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है, साइडवेज टू बुलिश बायस आप ले सकते हो, बट अगर हम 6680 के नीचे जाते हैं तो हो सकता है शायद फिर से ये लो टेस्ट हो जाए टुवर्ड्स 6450 और. बट ऑन द अपसाइड फॉर बैंक निफ्टी टू मूव हायर, आई थिंक आप देखोगे ये जो हाई था इस दिन एक गैप अप हुआ था 9 फरवरी को. आई थिंक ये इंडिया यूएस डील के बाद ये जो गैप अप हुआ था वो था आई थिंक 6876 का. बट आई फील 6900, आई थिंक दैट इज अ की ट्रिगर फॉर बैंक निफ्टी. अगर हम 6900 के ऊपर जाते हैं, then chances are that even Bank Nifty can kind of move up higher. On the daily chart, एकदम extremely narrow range आप देखोगे पिछले 4 दिन. भले अगर मैं आपको एक रेंज बता दूं तो नीचे की तरफ ये रेंज है और ऊपर की तरफ आपका ये रेंज होगा. तो जब तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 6900, नीचे की तरफ 6500, ये 400 पॉइंट के बैंड में जब तक बैंक निफ्टी है तब तक साइडवेज. बट ये जैसे ही या तो बैंड के अगर ऊपर जाता है 6900 के ऊपर, देन आई थिंक इट कैन मूव अप. बट अगर ये 6500 के नीचे जाता है तो हो सकता है शायद ये गैप फिल हो जाए. ये जो 9 फरवरी को जो ये गैप बना था वो मे बी टुवर्ड 6150 6200 तक जो गैप है वो फिल हो सकता है ऑन दी डाउनसाइड इन बैंक निफ्टी. अभी अपने इंडेक्स के बारे में देख लिया, अब हम सेक्टर्स के बारे में देखते हैं कि कौन सा सेक्टर्स है दैट इज डूइंग वेल, द सेक्टर्स दैट आर नॉट डूइंग वेल. So clearly avoid Nifty IT का, you know what's happening on the IT front. So IT clearly is in the lagging quadrant. वो एक इकलौता सेक्टर है फिलहाल इस मार्केट में जो relatively अंडर परफॉर्म कर रहा है. So बॉटम फिशिंग मत करना IT में, बिकॉज थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साइंस हमें दिखना चाहिए IT में. वेट फॉर सम रिवर्सल साइंस, अवॉइड IT फॉर नाउ. अगर आपके पास IT के पोजिशंस है तो उसमें हल्का होना ही काफी बेटर होगा, बिकॉज पता नहीं है कहाँ तक गिर सकता है. काफी एयर रिलेटेड न्यूज ने थोड़ा सा प्रेशर बना के रखा है आपके आईटी इंडेक्स में. If you look at the sectors that are doing well, again consumer durables continues to do well. अभी देखो improving से अभी leading quadrant में आ गया है. So strength has come back into the consumer durable space. Clearly consumer durables is one sector that is doing well. Apart from that, I feel even infrastructure has been steadily placed in the leading quadrant. Even manufacturing index is also one another sector that continues to do well. Auto हमने कल देखा था, auto is moving from improving to leading quadrant here. So clearly some action in the auto space as well. One another sector, ये तो sectors हमने कल भी देखा था, almost कुछ change नहीं है, but एक sector है जिसमें एक improving signs नजर आ रहा है, that is financial services. अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज देखोगे उसमें स्ट्रेंथ तो था, मोमेंटम नहीं था, बट ये वीकनिंग क्वाड्रेंट से फिर से अब वही से रिवर्स मार के लीडिंग क्वाड्रेंट में जाते हुए नजर आ रहा है. सो अगर आप देखोगे फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, श्रीराम फाइनेंस है, all that stocks those that are doing well here. Karthikeyan ji, please try to speak in English fully. Karthikeyan ji, okay, I'm just I want to reply to Karthikeyan ji here. Karthikeyan ji, ನಾನು ತಮಿಳ್ನ ಪೇಶ್ರೆ, ನಾನು ತಮಿಳ್ನ ಪೇಶಿನ ವರ ಆರ್ಕಂ ಪುರಿಯಾದಿಂಗ. So ಇಂಗ ಹಿಂದಿಯೋಡ ಕ್ರೌಡ್ ಮಿರ್ಪ, ತಮಿಳ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮಿರ್ಪ, ಹಿಂದಿ ಕ್ರೌಡ್ ಮಿರ್ಪ ಇಂಗ. ನಾನು
full English la peshina Hindi crowd ko puriyade, Hindi la peshina English crowd ko puriyade. So I try to keep between Hindi and English here, Karthikeyan ji. So in between I do some English. I try to keep majorly in Hindi so that both set of people are happier. So nothing against that. I think I tried to talk to you in Tamil. I hope you will understand that, Karthikeyan ji. ठीक है. For the others, I just said मैं हिंदी और इंग्लिश के बीच में स्विच करता हूँ. That is what I said in Tamil here. So I am myself Tamil. I speak Tamil. My mother tongue is Tamil. मैं ले सकता हूँ तमिल में, but again I keep switching between English and Hindi. So financial services is also one sector that can do well. So consumer durables, manufacturing, infrastructure, and financial services. These are the sectors probably that should be on your radar. Now that we have looked at the sectors, we can look at some stocks that are doing well from these sectors. So like I said, if you look at financial services, so financial services by Nifty has kind of given a downward sloping trend line breakout, and you can clearly see that the ratio line is moving upwards. So clearly, financial services is outperforming Nifty. A couple of stocks from the financial services space. One is ICICI Bank. अगर मैं ICICI Bank की बात करूँ, so ICICI Bank ने आज एक range breakout दिया. It was kind of moving in a 1415 to 1380 range, and it was unable to break past the 1415 zone in the last 4 or 5 sessions. Today it has given a breakout, and I think if this continues, it can move towards 1445, 1450 in the short term, with around 1390 acting as a strong support for the stock. Apart from that, even Shriram Finance has given a fresh breakout on the daily charts. By the way, financial services index has given a fresh breakout. अगर आप देखोगे श्रीराम फाइनेंस काफी टाइम से एक जोन में कंसोलिडेट हो रहा था. 1025, 1030 was acting as a strong resistance. It gave a breakout, consolidated for a couple of days, and again you could see Shriram Finance has given a strong follow through move here. And that is why I particularly said, अगर आप देखोगे financial services is moving from weakening quadrant to the leading quadrant, and you can see that some of the financial services stocks are kind of doing well here. So Shriram Finance needs to hold about 1020, 1025. I think as long as Shriram Finance is able to do that, chances are that it can do well. Apart from that, auto is also one sector. I kind of missed out on auto, but even auto is moving from improving to leading quadrant. So keep an eye on auto sector as well. There are some names from the auto space. अगर आप auto by Nifty का ratio chart देखोगे, so clearly the ratio line is rising, which means that that sector overall is kind of outperforming Nifty. But if I have to pick up a couple of stocks from the auto space, one would be Bajaj Auto and the other would be TVS Motors. These are a couple of stocks that are doing well from the auto space. Bajaj Auto in particular, it's trading near its resistance. अगर आप देखोगे ये जो 9850 9900 का एक strong resistance है Bajaj Auto का, और आज ऐसे लग रहा है क्या that the stock is almost on the verge of a breakout here. But अगर ये 9900 के ऊपर एक strong closing देता है Bajaj Auto, then chances are that we can expect more upside. Or probably its immediate support would be somewhere around 9750, 9720. As long as Bajaj Auto stays above this zone, the overall trend is likely to be positive. The other stock from the auto space, we've discussed this stock earlier, but again the chart structure looks good. So that is TVS Motor. So TVS Motor is also near its resistance here, 3900, 3910. I think any breakout above 3910, that could push the prices even higher. And maybe you can slightly shift the support higher towards 3790, 3800. Any breakout above this can lead to stock moving higher. Their infrastructure, we also saw infrastructure as a sector is doing well. It's placed in the leading quadrant. वहाँ पे भी काफी strong traction है. So infra has given a downward sloping trendline breakout. And couple of stocks from the infra space. One would be Indus Tower. Again, we have discussed this counter. Indus Tower looks good. It has given a horizontal trend line breakout and a strong follow through भी नजर आया यहाँ पे.
So as long as Indus Tower stays above 454, chances are that it can continue its up move. Apart from that, even Larsen and Toubro, आप देखोगे, it's nearing a breakout here. The previous high was around 4,200. यहाँ पे पिछले 2 दिन में एक हेजिटेशन दिखा था 4,200 के आसपास, बट इफ वी गेट अ स्ट्रॉन्ग क्लोज अबाउट 4,200, the stock has it has reversed strongly from its 200-day EMA. But I think any move above 4,200, that could push the prices higher, and we can probably expect LNT to even move higher. And maybe you can have your support somewhere around 4,110, 4,120. That is where you can place an immediate support for Larsen and Toubro. And lastly, like I said, even manufacturing as an index is doing well. So manufacturing index is also outperforming the Nifty index. So couple of stocks from the manufacturing space. One is Voltas. अगर आप देखोगे, Voltas has also given a fresh breakout on the daily chart. So I think 1500, 1515, that is where the resistance was. And today even Voltas is looking to move out here. आप देखो कैसे हम पहले sectors देख रहे हैं, and sectors के under how are we zeroing down on the stocks here. So Voltas, I think if it sustains above 1520, 1540, chances are that even Voltas is likely to move higher. And lastly, another stock that can do well is Polycab. So Polycab again, यहाँ पे 200 डे नीचे 200 डे EMA के नीचे आ गया था, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी नजर आई है Polycab में. Though it has some resistance around 7,900, 7,950. I think it's still somewhere around 150 points lower from where its resistance is. But the overall structure is positive. I think it can again move towards 7,900. And अगर वो भी पार कर दिया तो शायद और upside देखने को मिल सकता है. But the immediate support will be around 7,630, 7,650. That is where the immediate support is placed. So financial services, consumer durables, infrastructure, manufacturing, auto, these are the strongest looking sectors. Avoid IT for now. Like I said, थोड़ा सा अभी avoid करना IT में there is a lot of uncertainty going on currently. Okay, now talking about the concept for the day. So yesterday, if you remember, we discussed P ratio. आज हम डिस्कस करेंगे price to book value ratio here. Especially this is one metric that is keenly tracked for two companies, two industry sectors basically. One is your banks and NBFCs. ये particular sector में ये वाला ratio काफी use होता है. And secondly, ऐसे sectors, ऐसे companies में which are asset heavy. How many of you all are aware of price to book value ratio, guys? If you can let me know in the chat box. I'll एक बार मैं concept बता देता हूँ, and then I will start off with our question and answer. Anyone who's new to price to book value, or anyone who doesn't know price to book value, if you can let me know. So P2BV stands for price to book value. कल हमने प्राइस को कंपेयर किया था अर्निंग्स के साथ, दैट वाज प्राइस टू अर्निंग्स. टुडे वी आर कंपेयरिंग प्राइस टू इट्स बुक वैल्यू हियर. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज योर बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? सो दिस इज नथिंग बट प्राइस पर शेयर divided by your book value per share. That is nothing but your price to book value ratio. So book value basically क्या होता है? Now हर कंपनी का, so basically you are comparing your market price of that company to the book value per share. Book value मतलब अगर कल कंपनी लिक्विडेट होता है, अगर कल कंपनी को बंद करना पड़ता है, तो कितना पैसा हमें कंपनी से मिल सकता है. व्हाट इज, अगर सब एसेट वैसेट बेच के लिक्विडेट करके कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल सकता है, दैट इज योर बुक वैल्यू ऑफ दैट कंपनी. सो बेसिकली अगर आप देखोगे योर टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल या आपका कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, उसका टोटल प्लस जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, दैट आल्सो बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड. This too, that is nothing but your book value of that company. Accounting basis पे जो book value है, what is the actual value of that company based on your books. So आपका जो equity, जो जिन्होंने पैसा दिया है, preference जिन्होंने पैसा दिया है, वो पैसा प्लस जो reserves and surplus में जो accumulate हुआ है वो पैसा, that together is nothing but book value. इसको अगर आप divide करोगे by number of outstanding shares,
तो आपको मिलेगा बुक वैल्यू पर शेयर। नाउ मान लो अगर एक स्टॉक है जिसका प्राइस है मार्केट में 100 रुपीज, दैट इज योर CMP इज 100, और बुक वैल्यू है मान लो उसका 50, सो उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू होगा दैट विल बी 100/50, दैट विल बी 2। सो इसका मतलब द प्राइस इज 2x ऑफ इट्स बुक वैल्यू ईयर, बिकॉज बुक वैल्यू 50 रुपए है। सो आइडियली आप देखोगे लॉट ऑफ गुड कंपनीज विल ऑलवेज हैव अ प्राइस दैट इज हायर देन इट्स बुक वैल्यू ईयर। बट अगर मान लो बुक वैल्यू ही 50 रुपया है बट मार्केट में पीपल आर ओनली गिविंग ओनली 10 रुपीज फॉर इट, so your price to book value would be nothing but 10/50, which is 0.5. On paper it might sound like ये तो अंडरवैल्यूड है, बिकॉज बुक वैल्यू 50 रुपए, मार्केट में आपको 10 रुपए में मिल रहा है, तो आपको लगेगा अंडरवैल्यूड है, बट अंडरवैल्यूड कुछ और कारण से भी हो सकता है। A lot of people consider this as a value pick, but it necessarily doesn't have to be a value pick here. I think then you have to understand the reasons as to why people are paying less than the book value of the company. Now the ideal comparison is, let's say एक अगर हम बैंक्स का एग्जांपल देखेंगे, so we will look at 3 banks, let's say HDFC Bank, ICICI Bank and let's say Kotak Bank, all 3 private players। आपको कंपेयर करना है कि तीनों का बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है और किसका कम है। Ideally lower the P ratio it is better, and similarly lower the price to book value it is better, but ensure I would usually I don't look for companies जिसका market price is even lower than a book value here। Ideally relative basis पे आपको देखना पड़ेगा कि between the 2 or 3 companies जो कि like minded business में है, उनका price to book value में से सबसे cheap कौन सा है। So now let's look at an example. I hope this example was clear. So हम लोग सबसे पहले देखते हैं HDFC Bank। So if you go to screener.in, आप HDFC Bank आप देख सकते हो यहाँ पे price to book value, you can see that. So the book value is rupees 364, the price of HDFC Bank is 921. So आप देख सकते हो almost the price is 2.5x of its book value, because book value 360 रुपया का है और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है बैंक HDFC बैंक का वो 920 रुपया का है। So the price to book value of HDFC is 2.54, so we can write here it is 2.54। अब हम देखते हैं ICICI Bank। What is the price to book value for ICICI Bank here? If you look at ICICI Bank, the price to book value is 2.92, slightly higher than HDFC Bank, but probably somewhere around the same range। आप देख सकते हो 2.92 के आसपास है। Now we can see what is the price to book value of Kotak Bank। अगर हम Kotak Bank की बात करें, the price to book value is 2.56। You can see largely in line here, 2.5 to 3, that is where the price to book value is। I think we can also see what is the price to book value for Axis Bank। Axis Bank is relatively आप cheaper आप बोल सकते हो, because Axis Bank का price to book value देखोगे, that is Axis is around 2.05। So between the 4 of them, if you want to probably pick out one stock just purely on the basis of price to book value, that is you can say it will be Axis Bank here। सबसे हाईएस्ट आप बोल सकते हो दैट इज ICICI, सबसे लोएस्ट आप बोल सकते हो दैट इज एक्सिस बैंक। सो दैट इज हाउ यू डू अ लाइक टू लाइक कंपैरिजन ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू एंड फाइंड आउट व्हिच वन इज चीपर। बट सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं देखना, आपको बाकी सारे पैरामीटर्स भी देखना है जो हमने किया था। क्लियर? सो दैट वाज द कांसेप्ट फॉर द डे, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू। नाउ डिड यू फाइंड आउट एनी कंपनीज जहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ROE है, ROC है, ऑपरेटिंग मार्जिन है, EBITDA मार्जिन है, डेट फ्री है या डेट है तो इट सपोर्टेड बाय रेवेन्यू, गुड रिजर्व्स है, प्राइस टू इक्विटी कम है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बाकी कंपैरिजन से कम है। डू यू हैव एनी स्टॉक दैट यू नो इन योर माइंड दैट काइंड ऑफ मीट्स दिस क्राइटेरिया? हम रोज रोज एक नए क्राइटेरिया ऐड करते जा रहे हैं ताकि आपका एक स्क्रीनर जैसे बन जाएगा टुवर्ड्स द एंड। Do you have any companies RDG seeing AIA engineering? Okay, let me see. AIA engineering प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। 3,500 4,900 थोड़ा सा डिप हुआ था यहाँ पे। सेल्स थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पे आरडीजी। ये देखो TTM भी टुडे आई थिंक दे आर एट 4,300, दे आर येट टू गो अबाउ देयर मार्च 2023 numbers। Operating profit has also kind of dipped from 1245, they have gone down to 15। थोड़ा सा प्रेशर है लास्ट 2 साल में इनका। Net profit has also kind of
थोड़ा सा कम हुआ है नेट प्रॉफिट यहाँ पे. ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है, दे डू हैव गुड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. If I look at industry P 25.7, stock P थोड़ा सा overvalued है यहाँ पे RDG, and price to book is 5.01. Interesting. Maybe और थोड़ा better company मिल सकता है I feel RDG इसमें. अच्छा आज okay, I'll look at Trident. एक मिनट में टेक्निकल व्यू बता देता हूँ. ट्रिडेंट आई थिंक अवॉइड करना आई फील, जब तक 29 के नीचे ट्रिडेंट, इट्स बेटर टू अवॉइड दैट. लिकर स्टॉक्स स्पेशली यूबीएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको कहता ना ओवर वैल्यूड बाय पी, बट जीएम ब्रूवरीज इनफैक्ट वो लोग देसी दारू बनाते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. GM Brewery, so 35.9, 14.6, interesting. ROE at 14.6%, 18.1%, price to book is 2.4. Profit making company, EPS is 71. Now let's see the numbers. 450, 594, 615. Oh, very good numbers. Sales growth is increasing. Profit after tax 9300, 152. I think March 29 में थोड़ा सा dip हुआ था profit. Again, I think they have gone back to 163. Interesting. Operating cash flows भी है 162, 97. Good company. I think numbers are good. I think ये देखो सितंबर 2025 से GM ब्रूवरीज भागा था, बिकॉज मार्च 25 में एक डिप आया था, राइट? अगर आप देखोगे मार्च 25 is where the numbers kind of dipped here, 125. But let's look at GM breweries. Yeah, I think seems to be a good stock. I think this was the P. I think ये earnings के बाद March 2025, October 2025, I think post its quarterly numbers when it was almost flat, I think यहाँ पे GM breweries का काफी strong movement आया था. But overall it's been good. I think it's at 1040. थोड़ा सा भी एक sideways consolidation में है, but I feel this is technical basis पे, I think this is the major resistance, 1300, but that's like almost 300 points away. And on the downside, I feel there is a strong support around 925. So as long as it holds about 925, chances are that it can kind of go up. Laurus Labs तो हमने कल देखा था इसको. The stock P is very high. 29.8 is industry P, stock P 65.1. Labor code, I think that has also impacted IT companies also, but I feel this will be a one-time adjustment. I don't think it is going to materially change. I think it will be a one-time only. I'm not, there's not a permanent, because from next year onwards, they'll probably kind of have that incorporated. So one-time change है labor code के वजह से. I'm not saying a major change होगा. ASK Automotive, I think bearish ही है overall trend. I think we'll start with our question and answer now. I think ASK Automotive, Vivek ji, I think ये overall trend is down. I think जब तक ये 460 के नीचे होगा तब तक the trend is likely to remain bearish. Premier Energy, still I would say nothing much has improved, but I think if you're already holding, then you can probably have around 710, 715 as a SL or a support for this. I think if it breaks below that, then it's better to exit. मार्केट में स्ट्रेंथ क्यों नहीं है सर? ट्रेड डील इज डन, रेट कट इज डन. क्या रीजन हो सकता है वो? आई डोंट नो, मे बी अगर इफ आई हैव टू पिक आउट, सी अभी भी शॉर्ट कवरिंग उतना हुआ नहीं है एफआईआईस की तरफ से जितना होना चाहिए. ट्रेड डील में भी अभी भी काफी अनसर्टेनिटी है. वी आर स्टिल एट द इंटरिम डील ही है. देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस आल्सो गोइंग फॉरवर्ड, बट क्लियरली मार्केट में वो जो सेंटिमेंट दिखना चाहिए था वो सेंटिमेंट दिखा नहीं है यहाँ पे. सो आज तो आई थिंक भारत बंद भी है. फार्मर्स का आई थिंक प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन ऑलमोस्ट इन अ लॉट ऑफ states in India. So farmers are also not very convinced, I feel, looking at this, but I think we'll have to, I think government has clarified their stance.
But I don't know. I think what is it that is kind of holding back. Even I really don't have an answer to it. Probably if I have to face value पे अगर मैं बताऊँ तो maybe I feel अगर higher dollar, I think अगर dollar I think 90 के थोड़ा नीचे आता है, probably that could be one trigger. Secondly, like I said, ये जो government bond yields है, that is at the elevated levels. Ideally जब हम fiscal deficit maintain किए है, inflation under control है, if a lot of stocks are if overall if as an economy is doing well, then ideally आपका yields इतना नहीं होना चाहिए 6.7%. The yield should be somewhere around 6.5 6.4%. So yields are kind of elevated here. That is kind of having some pressure on the markets, but overall some of the sectors have started to do well. I feel mid cap and small cap space जो काफी beaten down था, उसमें भी थोड़ा strength आते हुए नजर आ रहा है. And large cap names are kind of gone steady for now. But I think we'll have to wait and watch and let's see कब वो trigger आता है. Long short ratio भी इतना improve नहीं हुआ. Short covering, FII still are holding more shorts. I think Q3 numbers भी हो गया. Q3 results were in line थे, इतना भी ज़्यादा. We didn't have a strong Q3 earning numbers. Even if you look at the GST collections, post the GST cut, even the GST numbers hasn't improved much. भले ही ऐसे आया था कि GST cuts के बाद prices अब कम हो गए. इनफैक्ट prices बढ़ गए, आपके GST collections में भी उतने numbers दिख नहीं रहे. So maybe we'll have to wait for a couple of more quarters, maybe one more quarter, see and how Q4 goes. I think this will be a important period. Budget भी हो गया, RBI meet भी हो गया. I feel we are meeting for that one catalyst. I don't know क्या catalyst हो सकता है, but one good trigger, and I don't know अभी फिलहाल के लिए मैं पता नहीं को क्या trigger हो सकता है that can push the prices higher here. Most of the Indian companies are waiting for clarity. They want to have long-term collaboration with auto sectors. Yeah, ideally, I think clarity मिला नहीं. I think क्योंकि interim trade deal है, I think people are making their own assumptions out of it. Plus, there was also a change in the document. Previously, they said India will do around $500 billion of trade with US. Then they changed it to the India intends to do $500 billion of trade. So there is a lot of ambiguity. There is abhi bhi ek certainty आया नहीं है. The tariffs has been reduced to 18%. Again, there is uncertainty whether we are going to buy Russian oil or not, because they mentioned in the order saying if we buy Russian oil, again, they are going to put that 25% tariffs. I think nobody knows whether we have stopped buying Russian oil. Are we buying Russian oil, or are we going to buy more US oil, Venezuelan oil? उसमें भी अभी तक एक clarity आया नहीं है. So I think maybe वो clarity के वजह से ही markets are in that wait and watch mode. I think वो आने के बाद chances are that maybe you can do well. सेबी रजिस्टर के लिए क्या करना पड़ता है? आई थिंक पहले तो आपको रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम देना पड़ता है, फिर एक रजिस्ट्रेशन फीस होता है. आई थिंक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन आपका नेट एसेट्स कुछ 5 लाख 25 लाख, आई थिंक ऐसे कुछ फिगर्स है. यू हैव टू रजिस्टर विद सेबी एंड दे विल गिव यू अ सर्टिफिकेट. यू हैव टू पे अ फीस एंड गिव एन एप्लीकेशन टू सेबी फॉर रजिस्ट्रिंग. De-dollarization, I think then US will let us hard. I think if de-dollarization kind of happens. How do view Indian business tycoons, Adani, operating cash flows and grow? Gautam Upadhyaya, next Anil Ambani. I think that is one concern, but I think if they are able to generate at least double of revenues of what the kind of debt they has, because they are in that business which is very capex heavy, asset heavy. So if the revenue growth doesn't come, if the earnings doesn't improve, then probably even a lot of companies will be under pressure under that. But yeah, I think we'll have to see whether the revenue growth is also kind of steady with the kind of debt growth that Adani see. I think especially it's very important to see whether they are generating cash flows, they are generating enough reserves, good revenues and profits as well. Avoid that Parmeshwaran ji, OFS of BHEL. I think avoid karna hi better hai. Impact of textile, I think Bangladesh mein, I think 0% tariffs, right, on their textile exports to US. That has also kind of weighed on Indian textile companies.
So I think Bangladesh again, textile hub to hai. I think Bangladesh is kind of famous for that. But with less tariffs on Bangladesh, again, textile companies will have to kind of fight it out with Bangladesh now. So again, I feel pura clarity abhi bhi aaya nahi hai India US deal. I think that is the reason why markets are still in that wait and watch mode. Yeah, EPS will do that. Tomorrow sessions we'll have a brief on earnings per share. Yeah, we'll do that. And also, guys, today evening we are meeting again at 4 o'clock. We are going to discuss about a Batman option strategy. Do attend that, guys. It's going to be a fun session. Slightly complex option strategy, but I'll try to make it as simple as possible. So I guess that's all from today's session. I hope you all are enjoying these mid-market sessions. You are finding value, and it's worth the time that you are giving to us by spending time from 12:30 to 1:15 with me. So thank you for that, guys. Thank you for attending. And if you find value, do share it with your friends, families, and relatives as well. Okay, I'll see you in a couple of hours. So that's a wrap of today's session. And I'll see you at 4 o'clock for the webinar on Batman option strategy. Until then, bye, guys. Take care and stay safe. And I'll see you in a couple of hours. Take care, guys.